Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I am Muhammad Ashraf, Master Boys Higher Secondary, Lalpura. I am going to deliver a lecture of English subject for the students of class 9th. Dear students, our today's topic is the Tempest First, which is a play, means a drama, which is written by William Shakespeare. Dear students, first of all, I will give you a short introduction of William Shakespeare. Who was William Shakespeare? जिसने इस ड्रामा प्यारे बच्चों द टेम्पेस्ट फर्स्ट को लिखा, यानी विलियम शेक्सपियर वो कौन था? विलियम शेक्सपियर was the most world's popular dramatist. He was born in 1564 and died in 1616. He was widely regarded as the greatest writer in English language. William Shakespeare was often called England's national poet. He wrote 38 plays. प्यारे बच्चों, विलियम शेक्सपियर ने कुल 38 ड्रामे लिखे and 154 sonnets and several other poems. Dear students, now I will try to understand you the important points of this lesson, The Tempest First, which is a play written by William Shakespeare. And in fact, this is the last play of William Shakespeare. So, the important points of this lesson, The Tempest First, are, first of all, this lesson is containing a beautiful verse. There is also wisdom of thought in this lesson. तो इस लेसन में जिसका नाम है टेम्पेस्ट फर्स्ट, प्यारे बच्चों, there are also themes of reconciliation and repentance. Yes, themes of reconciliation and repentance. तो themes क्या काम आने हैं? प्यारे बच्चों, themes का माने है मौजू. इस सबक में ज़ेरी बहस से मौजू ये भी है, what is reconciliation and what is repentance. तो reconciliation and repentance, these are two new words for you. तो पहले बच्चों, reconciliation किसको कहते हैं? ये सुलह. जब दो पार्टियों के दरमियान या दो आदमियों के दरमियान या जो घरों के दरमियान लड़ाई होती है और जब वो आपस में सुलह करते हैं, लड़ाई छोड़ देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड रिकंसिलिएशन, उसको कहते हैं सुलह. एंड अनदर थीम ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन का दूसरा मौजू जो है वो रिपेंटेंस है. मेरे बच्चों, रिपेंटेंस जो है ये ग्रामर के लिहाज से इट इज नाउन एंड इट्स वर्ब फॉर्म इज रिपेंट. इट्स वर्ब फॉर्म इज रिपेंट. रिपेंट इज वर्ब and repentance is noun. तो repent का क्या मतलब है? पछतावा करना, नादिम होना, शर्मिंदा होना. and repentance का क्या माने है? पछतावा. तो repentance क्या होगा? पहले बच्चों, जब किसी आदमी से कोई गलती सरजद होती है और वो गलती करने के बाद जब वो पछताता है कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी,
जब इस पर वो नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, तो उस शर्मिंदा होने को, नादिम होने को, उस पछतावा जो वो करता है, तो उसी को कहते हैं रिपेंटेंस. So this lesson, namely the Tempest first, dear students, it also containing two themes, and they are reconciliation and repentance. In this lesson, there is also that there happens a storm and a ship got wrecked. तो यहां पर क्या वर्ड है? WRECK, but it is pronounced as, but it is read as, लेकिन इसका तलफ़ुज़ क्या है? प्यारे बच्चों, इससे कैसे पढ़ा जाता है? WRECK, RAK, right. यानी फिर इसमें तूफान आता है इस लेसन के मुताबिक, इस सबक के मुताबिक, जिसका नाम है टेम्पेस्ट फर्स्ट, और फिर एक जहाज की तबाही और बर्बादी होती है. Dear students, one of the important points of this lesson is that this lesson containing the beautiful love story of two young people. तो यहां पर मैंने इस्तेमाल किया कपुल. कपुल मीन्स जोड़ा. जैसे मियां बीवी होते हैं तो एक जोड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड कपुल. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की और एक लड़का, उनकी जोड़ी जो बनती है उसको कहते हैं कपुल. सो इन दिस लेसन देयर इज द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ ए यंग कपुल. एक जवान जोड़ा होता है, उसकी लव स्टोरी भी यहां है इस लेसन में. और वो यंग कपुल कौन? Miranda and Ferdinand. So dear students, these are the important points, main points of this lesson, and those, once again, those important points are that this lesson, the Tempest first, it is containing beautiful verse, wisdom of thought. There are also themes of reconciliation and repentance. I have already told you what does the word reconciliation mean and repentance mean, and there is also that there happens a storm and a ship got wrecked. There is also the beautiful story of a young couple, Miranda and Ferdinand. तो प्यारी बच्चों, अब मैं आपको इस लेसन की मुदल्लल जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा. Now I will give you a detailed summary of this lesson, the Tempest first. On a lonely island, there once lived three people. पहले बच्चों, एक तन्हा जजीरा था, उस पर तीन लोग रहते थे. तो वो तीन लोग कौन थे? प्रॉस्पेरो, मरिंडा एंड कैलिबो. ये तीन लोग रहते थे, प्रॉस्पेरो, मरिंडा एंड कैलिबो. Now the question is, who was Prospero? Dear students, Prospero was a wise old man. Yes, who was Prospero? Prospero was a wise old man. पहले बच्चों, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है wise old man, here we see, यहां हम देखते हैं two words, wise and old. These two words are adjectives. Dear students, an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun, or which qualifies somebody's goodness or badness. हाँ पहले बच्चों, एडजेक्टिव उस लफ्ज को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या खुसूसियत को बयान करता है, या वो लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई जाहिर करता है. तो उसी लफ्ज को जो ये अच्छाई या बुराई जाहिर करे, या वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करता है, तो उस क्वालिटी बयान करने वाले लफ्ज को एडजेक्टिव कहते हैं. Yes, dear students, we see the word wise, it qualifies. Also the word old, it also qualifies. So these two words are grammatically adjectives. But this wise, it denotes
quality, so it is adjective of quality. And this old, it qualifies, it describes somebody's age, and this is adjective of age. Another person of this island, इस जजीरे पर जो दूसरा पर्सन रहता था, शी इज कॉल्ड मैरिंडा. वो कौन थी? मैरिंडा थी. अब पहले बच्चों मैरिंडा कौन थी? मैरिंडा वॉज ए यंग ब्यूटीफुल डॉटर. मैरिंडा एक जवान और खूबसूरत बेटी थी. अगेन वी सी देयर स्टूडेंट्स, here are two words, young and beautiful. Both the words qualify noun or pronouns quality. So these two words are adjectives. And again we see, so far as this word young is concerned, it denotes age, and it is adjective of age. And this beautiful, it denotes quality, so this is adjective of quality. But both the words are grammatically adjectives. Now dear students, you know that Miranda was a young beautiful daughter. And the third person who lived on this island, he is Caliban. अब सवाल है, who was Caliban? पहले बच्चों, Caliban कौन था? Caliban was a servant. Caliban was a servant of Prospero and Miranda. वो Prospero और Miranda का क्या? नौकर होता था, नौकर था. And he was fish-like. Fish-like means he was ugly. Ugly means बदसूरत, जिसकी शक्ल सूरत अच्छी न हो. And इसका ugly तो बदसूरत. तो who was Prospero? Prospero was a wise old man, and Miranda was a young and beautiful daughter, and Caliban was servant of Prospero, and Miranda, he was angry. Dear students, there was another person, and he was Ariel. Now, who was Ariel? Ariel कौन था? अब चौथा कैरेक्टर यहां आया, Ariel. Ariel was a spirit. पहले बच्चों, वो एक जिन होता, वो एक जिन था, एक आत्मा था. Ariel was a spirit. Before Prospero's arrival on the island, तो Prospero के आने से पहले, the word here arrival, it is noun. As we see, we use this arrival in our institutions. स्कूलों में हम arrival इस्तेमाल करते हैं. So arrival is the name of a thing, and this arrival, it is verb. Arrival means पहुंचना. So before the arrival of Prospero on the island, इस जजीरे पर Prospero और Miranda के आने से पहले, there was a person, वहां एक spirit था, Ariel, and there was a witch, वहां एक जादूगरनी रही, witch, जादूगरनी. Now the dear students, witch क्या होता है? जादूगरनी किसे कहते हैं? Witch means a female who keeps magic knowledge. A female who is knowing magic knowledge, she is called witch. And when a male knows magic knowledge, और जब किसी मेल के पास ये जादुई इल्म होता है, he is called wizard. हाँ पहले बच्चों, विजार्ड जब कोई मेल जादूगर होता है, नहीं जादूगर, और जब कोई फीमेल जादू जानती है, शी इज कॉल्ड विच. विच जादूगरनी, विजार्ड जादूगर. एंड हर नेम वाज साइकोरेक्स. बिफोर प्रॉस्पेरोस अराइवल ऑन द आइलैंड, देयर वंस लिव्ड अ विच. वहां एक जादूगरनी रहती थी प्यारे बच्चों, और उसका नाम क्या था? साइकोरेक्स. एंड एक्चुअली कालीबान वाज द सन ऑफ साइकोरेक्स. और जो प्रॉस्पेरो का सबसे पहला नौकर यानी कैलिबान था, वो इसी
जादूगर ने जिसका नाम साइकोलैक्स था उसका बेटा था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, साइकोलैक्स imprisoned. The word imprison, it is verb and its noun form is prison. Prison किसे कहते हैं? जेल को, कैद को। जब कोई इंसान कोई जुर्म करता है, वो मुजरिम बन जाता है, तो उस मुजरिम को जब जेल भेजते हैं तो उसको कहते हैं प्रिजन। एंड इम्प्रिजन मीन्स जेल भेजना, बंद करके रखना, कैद करके रखना। एंड अनफॉर्चुनेटली, और बदकिस्मती से, साइकोलैक्स who was a witch, their students who was the mother of Caliban, she imprisoned Ariel in the heart of a pine tree. The word here pine. Pine means a forest tree. चील का दरख्त जो होता है। तो कहते हैं साइकोलैक्स ने, as you know, he was a witch, he was keeping magic knowledge, he was keeping magic power, उसके पास जादुई ताकत था। तो उस जादुई ताकत को इस्तेमाल करके उसने एरियल को एक चील के दरख्त में बंद करके रखा था। एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड विदाउट रिलीजिंग एरियल। और बदकिस्मती ये थी कि वो मर गई, उसका इंतकाल हुआ। एंड शी डाइड बट विदाउट रिलीजिंग, लेकिन आजाद करने के बगैर ही। किसको? एरियल को। एंड इन दिस वे एरियल रिमेन्ड इन द हार्ट ऑफ दैट पाइन ट्री, और एरियल उस चील के दरख्त में बिल्कुल कैद करके रहा, बंद करके रहा। एंड आफ्टर दैट, और पहले बजे उसके बाद, व्हेन प्रॉस्पेरो एंड मेलिंडा अराइव्ड ऑन द आइलैंड, और फिर जब प्रॉस्पेरो और मेलिंडा इस जजीरे पर आए, जब वो पहुंचे 12 साल पहले, Prospero saw Ariel in the heart of a pine tree. As you know, Prospero was himself keeping magic knowledge. उसके पास जादुई इल्म था, उसके पास जादुई ताकत था. So, by his magic power, he saw, he found, the word here found, यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया found. तो found का क्या माने है? saw. यहाँ पर found माने नहीं पाया, saw. देखा उसने, he saw, उसने एरियल को उस चील के दरख्त के अंदर बंद करके पाया. He used his magic power. Who used his magic power? Prospero. Prospero ने अपना वो जादुई इल्म, जादुई ताकत इस्तेमाल किया एंड रिलीज मीन्स सेट फ्री, आजाद किया. किसको? एरियल को उस चील की दरख्त से. ये बहुत बड़ी मेहरबानी हुई मेरे बच्चों, ये बहुत बड़ी मेहरबानी हुई. किसकी तरफ से? प्रॉस्पेरो की तरफ से. किसके लिए? एरियल के लिए. सो इन दिस वे, इस तरह से एरियल बिकेम ए फेथफुल एंड ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पेरो. इस तरह से एरियल जो है वो प्रॉस्पेरो का एक वफादार नौकर बन गया. सो द वर्ड हियर faithful. Faithful means adjective. Faithful, again the faithful word means adjective because it qualifies somebody's goodness or badness. Because it qualifies a noun or a pronoun. So this is adjective. और जब एरियल प्रॉस्पेरो का और एक वफादार दोस्त बन गया, he carried out his master's wishes. Who? Ariel. On the command of Prospero के हुक्म के मुताबिक, Prospero की ही कहने पर, he arise Tempest in the sea. उसने समुद्र में क्या वो तूफान उसने पैदा किया. And thunder in the air, और हवा में उसने गनगरज. Hear the word thunder. Thunder means noise of clouds. Noise of clouds. उसने हवा में क्या गनगरज, गरज यानी घबराहट की शब्द पैदा की. This was the work done by this Ariel. As you know, Ariel was also he was a spirit. वो एक जिन था, वो एक आत्मा था. So one day there arose a terrible tempest in the sea, and in
This tempest, a fine ship, was sailing in the cruel waves of the sea. एक आलिशान बेहतरीन समुद्री जहाज इस तूफान में फंस गया. There was cries of drowning sailors. उस जहाज में जो सैलानी थी, सेलर्स में सैलानी, जो समुद्री सफर के थे, पहले बच्चों उनको कहते हैं सेलर्स. तो उस जहाज में जो सैलानी थे, जब उन्होंने चलाया सेव, हेल्प, बचाओ बचाओ, मरिंडा who was in her home, जो अपने घर में थी उस जजीरे पर, she heard the cries of those drowning sailors. Dear students, here the word used drown. Drown का माने है डूबना. Sink also means डूबना. Drown is verb, sink is also verb. लेकिन जब कोई, पहले बच्चों, जब कोई जानदार चीज डूबती है तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ड्राउन. और जब कोई बेजान चीज डूबती है तो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंक. बट हियर, लेकिन यहां पर जो इस्तेमाल हुआ, ड्राउनिंग सेलर्स. ये ड्राउनिंग, आपकी किताब, आपकी टेक्स्ट बुक में ड्राउनिंग सेलर्स. सो हियर द वर्ड ड्राउनिंग, इट क्वालिफाइज सेलर्स. ये किसकी खूबसूरती, ये किन की क्वालिटी बयान करता है, ये किन की अच्छाई या बुराई बयान करता है? सेलर्स. सेलर्स क्या होता है? वो नाउन. सो दिस वर्ड ड्राउनिंग, इट इज हियर एडजेक्टिव. इट इज हियर, yes, it is here adjective. So the cries, so when Miranda heard the cries of those drowning sailors, it touches her heart. It touched her heart. इस आवाज ने इसके दिल को क्या चूर चूर कर दिया, छुआ. She became pity for them. Miranda को उन पर रहम आया. किन पर? जो ड्राउनिंग सेलर्स थे, जो डूब रहे थे वो सैलानी उस जहाज में. So she requested her father. प्यारे बच्चे, उसने इसके बाद अपने पिता, अपने बाप यानी प्रॉस्पेरो से उसने इल्तिजा की. Oh father, if you have raised this tempest by your magic power, please stop it. Please put an end to it. The father replied. बाप ने जवाब दिया, My dear beloved daughter, मेरी प्यारी प्यारी बेटी यानी मेलिंडा, डोंट बी अफ्रेड. डरने की बात नहीं है, मत डरो, मत खौफजदा हो जाओ, परेशान मत हो. नॉट ए सिंगल पर्सन शैल perish in the sea. Perish means die. P-E-R-I-S, perish, die. Both the words are grammatically verbs. Because perish, it denotes some action. And you know, dear students, the word which denotes some action is called a verb. So this word perish, it is verb. तो प्रास्पेरो ने अपनी बेटी से क्या कहा? Don't be afraid. Not a single person shall perish, shall die in this tempest. एक आदमी भी नहीं मर जाएगा. Now the first time Prospero narrated, described, or we can say told the strange story of his life to his beloved daughter Miranda. प्यारे बच्चों, प्रॉस्पेरो इसके बाद अपनी जिंदगी की स्ट्रेंज स्टोरी, अजीब दास्तान, स्टोरी हियर, STOR स्टोरी, कहानी, STOR स्टोरी, कहानी, अपनी जिंदगी की अजीब अनोखी दास्तान, अनोखी कहानी सुनाई. किसको? अपनी बेटी मेलिंडा को. कहा सुनो. Prospero told his daughter Miranda that once he was the Duke of Milan. Duke, D-U-K. Duke means king. इसे हम उर्दू में कहते हैं नवाब. अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं किसी दिन मैं मिलान का बादशाह था, नवाब था. I was Duke of Milan. The chief aim of my life, the main aim of my life, प्रॉस्पेरो ने मेलिंडा से कहा, मेरी जिंदगी का खास मकसद क्या था? नॉलेज.
इल्म। वेल्थ एंड पोजीशंस, वेल्थ एंड पोजीशंस, वेल्थ किसको कहते हैं? दौलत को, जायदाद, एंड पावर और ताकत, हार्डली मैटर्ड टू मी। उसने कहा नहीं, माल दौलत, जायदाद, ताकत ये मेरे लिए कोई माना नहीं रखते। माई चीफ एम ऑफ माई लाइफ वॉज नॉलेज। मेरी जिंदगी का सबसे और अहम और खास मकसद क्या था? इल्म। सो इसलिए एज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट, मुझे हुकूमत चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आई डिसाइडेड, बेटी मैंने फैसला किया, टू हैंड ओवर, कि मैं हवाले कर दूं अपनी हुकूमत का नज्म नस्क, अफेयर्स ऑफ द स्टेट, टू माई ब्रदर एंटोनियो। ये इस एंटोनियो। One more character of this lesson is Antonio. Dear students, who was Antonio? Antonio was the brother of Prospero. Antonio Prospero का भाई था। Prospero told his daughter Miranda that now the Duke became my brother Antonio। अब कौन बादशाह बन गया? Antonio, whose loyalty I never doubted। प्रॉस्पेरो ने मेरिंडा से कहा जिसकी वफादारी पर मैंने कभी शक नहीं किया। मुझे बिल्कुल शक नहीं था अपने भाई एंटोनियो की वफादारी पर, मैं उससे बहुत वफादार समझता था। लॉयल, वफादार। इन द मीन टाइम, और वी कैन से मीन वाइल, लेकिन इसी दौरान, माई ब्रदर नेमली एंटोनियो, मेरा भाई प्रॉस्पेरो कहता अपनी बेटी से, एंटोनियो, ही बिकेम ग्रीडी, उसे लालच हो गई। किस चीज की? पावर एंड पोजीशन, ताकत की और जायदाद या माल दौलत की। ही बिकेम ग्रीडी, वो लालची बन गया, जिसके बारे में मैंने सोचा था नहीं। मुझे उसकी वफादारी पर, अपने भाई की वफादारी पर पूरा यकीन था। सो ही ब्राइब्ड, तो यहां पर वर्ड इस्तेमाल आया ब्राइब, रिश्वत देना या रिश्वत। ही ब्राइब्ड माई मिनिस्टर्स and he plotted, P-L-O-T, plot, dear students, plot means to make a secret plan, कोई खुफिया साजिश रचाना, कोई खुफिया प्लान बनाना। तो प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी से कहा कि मेरे भाई एंटोनियो ने मेरे खिलाफ एक साजिश रचाई, एक प्लान बनाया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सीक्रेट प्लान? वो खुफिया प्लान क्या था? द सीक्रेट प्लान वाज, वो खुफिया राज ये था, प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी से कहा, ऑन ए डार्क नाइट, एक अंधेरी रात थी, बहुत अंधेरा था। देयर सोल्जर्स, हु सोल्जर्स? किंग ऑफ नेपल्स एंड एंटोनियोस। देयर स्टूडेंट्स, वन मोर पर्सन, किंग ऑफ नेपल्स, ही वाज द एनिमी ऑफ प्रॉस्पेरो। किंग ऑफ नेपल्स जो था वो प्रॉस्पेरो का जानी दुश्मन था। तो कहते हैं प्रॉस्पेरो के भाई एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स से मिलकर प्रॉस्पेरो के खिलाफ एक साजिश रचाई, एक खुफिया प्लान बनाया कि किस तरह से हम उसको, उन दोनों को मार डालें, यानी प्रॉस्पेरो और मरीना को। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को अपनी जिंदगी की अजीब दास्तान सुनाता है। तो व्हाट वाज द सीक्रेट प्लान? द सीक्रेट प्लान वाज, ऑन ए डार्क नाइट, देयर सोल्जर्स, उनके सिपाही ने, हु सोल्जर्स? किंग ऑफ नेपल्स एंड एंटोनियो सोल्जर्स। उन्होंने हमें निकाला अपने महल से, पैलेस मीन्स महल, जिसमें बादशाह रहा करता है, बादशाह का घर। एंड यू आर ए मेयर मैन, उस वक्त आप बिल्कुल एक छोटी मासूम बच्ची थी, आपको याद नहीं है,
मुश्किल से आपको शायद मेरा चेहरा याद होगा. यू आर क्राइंग इन माई आर्म्स माई बिलवड डॉटर. प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी से कहा, मेरी प्यारी बेटी. उस वक्त आप मेरी गोद में चिल्ला रही थी. एंड दे पुट अस into an old and damaged ship. Yes, dear students, old and damaged ship. तो उन्होंने हमें एक पुराने और तबाहशुदा जहाज, समुद्री जहाज में डाल दिया. ओल्ड एडजेक्टिव, डैमेज्ड एडजेक्टिव, बोथ वर्ड्स आर एडजेक्टिव. क्यों हमें एक पुराने और तबाहशुदा जहाज में डाला? बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू किल अस ओपनली. किंग ऑफ नेपल्स और एंटोनियो हमें खुलेआम नहीं मारना चाहते थे. इसलिए उन्होंने सोचा, उन्होंने प्लान बनाया, एक सीक्रेट प्लान बनाया, एक खुफिया साजिश उन्होंने हमारे खिलाफ रचाई. दैट कुड हार्डली फ्लोट. दैट ओल्ड एंड डैमेज्ड शिप हार्डली फ्लोट. इट कुड हार्डली फ्लोट. वो मुश्किल से पानी पर दिया. तो उन्होंने सोचा शायद बहुत दिन उसको लगेंगे, तो ये खुद को खुद इस जहाज में मर जाएंगे. But he told his daughters that there was a kind Lord, kind old Lord, and his name was Lord Gonzalo. Who was Gonzalo? Gonzalo was an old Lord. Though he was in the party of King of Naples and Antonio, अपनी बेटी से उसने कहा, अगर जो वो भी उसी पार्टी में शामिल था, यानी किंग ऑफ नेपल्स और एंटोनियो. बट ही वॉज वेरी काइंड. लेकिन उसके दिल में हमारे लिए बहुत हमदर्दी थी. ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द प्लान फेमर्ड बाय एंटोनियो एंड किंग ऑफ नेपल्स. वो इस हक में नहीं था. जो साजिश हमारे खिलाफ रचाई किसने? एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स ने, उसके हक में नहीं था. सो ही सीक्रेटली स्टोर्ड. टू वर्ड्स हियर, स्टोर्ड. तो किससे निकला है? स्टोर से. Yes, dear students, has word stored and it is used as verb. यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो? verb. We can use it as noun also. हम इसको noun भी इस्तेमाल करते हैं. Yes, there is a lot of grains in the store. हाँ, गोदाम में बहुत सारा बीज पड़ा हुआ है. When we say there is a lot of stock in the store, तो उस सूरत में जब हम ये सेंटेंस देखेंगे तो वहां स्टोर क्या इस्तेमाल हुआ? as noun. And when we use the word, even this textbook, namely in the lesson the Tempest first, here the word store, it is used as verb. To fill, bharna. So Prospero told his daughter Miranda that this kind Lord Gonzalo stored the ship secretly, चोरी से, चुपके से. हमारे दुश्मनों को कहने के बगैर ही उसने इस जहाज में भर दिया क्या? फ्रेश वाटर, ताजा पानी, फूड हमारे लिए ग़िज़ा, क्लोथ्स हमारे कपड़े, एंड माय प्रीशियस बुक्स, और मेरी वो कीमती किताबें जो मुझे अपनी बादशाही से भी ज्यादा कीमती थी. By the favorable winds, our ship arrived on this island. और फिर हमारा जहाज इस तरह और अकेले जजीरे पर पहुंचा. Prospero told his daughter Miranda that it is enough for you at present. After that, he touched his daughter with a wand. Wand means a stick. और ये students, wand means a stick. तो wand किसे कहते हैं? एक छड़ी होती है. And when we say with a magic wand, एक उसके पास एक जादुई छड़ी थी, उसने उससे अपनी बेटी को छुआ, and she fell asleep, और फिर उसे क्या? गहरी नींद पड़ गई. वो सो गई. इसके बाद क्या हुआ? Prospero called, or we can say summoned, his servant Ariel. उसने
अपने नौकर एरियल को बुलाया बाय वेविंग हिज मैजिक हैंड, वेव ने घुमाया, उसके पास जो जादुई छड़ी थी उसने उसको घुमाया, एंड एरियल अपीयर्ड बिफोर हिम, और एरियल इसके सामने नमूदार हुआ, जाहिर हुआ। तो उसने कहा हियर इज आई एम मास्टर, माय मास्टर, मेरे मालिक। हु वाज द मास्टर? हिज प्रॉस्पेरो वाज द मास्टर। सो हियर द वर्ड मास्टर it stands for Prospero. And whose master he was? Yes, dear students, he was in a, that is, Prospero was the master of Ariel. And Ariel told his master, namely Prospero, that I am ready, where to go and whatever to do. जनाब, मैं हर एक काम करने के लिए तैयार हूं और हर एक जगह जाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा, एरियल, Did you complete that work I assigned you? जो काम मैंने आपको करने को कहा कि आपने वो काम किया? Ariel replied, एरियल ने जवाब दिया, My master, मेरे मालिक यानी प्रॉस्पेरो, I performed the task as you commanded me. जिस तरह से आपने वो काम करने को कहा मेरे आका हजरत, मैंने बिल्कुल इसी तरह वो काम अंजाम दिया। I separated. Here the word separate. Separate means alahida kara. It is verb again and its noun form is separation. I separated Ferdinand, who was the son of Antonio, जो बादशाह एंटोनियो को बेटा था, मैंने उसको अलहदा किया किससे? एंटोनियो और उसके दूसरे साथियों से। और अब वो इस जजीरे के एक कोने में बैठा है। He is sad and disappointed. Sad and disappointed, both words are adjectives. अब वो दुखी है, परेशान है। Why he is sad? Why Ferdinand is disappointed? वो तो बच गया, तूफान में वो बच गया। फिर वो क्यों? Because he thought that his father has drowned in the tempest. क्योंकि वो सोच रहा था कि उसका बाप यानी एंटोनियो वो इस तूफान में मर गया। Ariel told his master Prospero that so far as Antonio and others are concerned, I took them on the other part of this island. उनको मैंने इस जजीरे के दूसरे तक ले जाया। And they are also sad. और वो भी परेशान है। They are also unhappy. They are also disappointed. Who? Antonio and others. Why? Because they also thought, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं। And particularly, खासतौर से, Antonio thought that he lost his son Ferdinand in this tempest. कि उसने अपने बेटे फर्डिनेंड को खोया इस तूफान। After listening this, ये सुनने के बाद, dear students, Prospero told Ariel, Prospero ने Ariel से कहा, well done, आपने बहुत अच्छा किया। Now listen, now we have a more important work to do. The time from now to the evening is very precious for we people. Dear students, here the word precious means valuable, बहुत कीमती। इसके बाद प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा, अब हमें और एक अहम और जरूरी काम करना है। इस वक्त से लेकर शाम तक जो बीच में वक्त है ये हमारे लिए बहुत कीमती है। When Ariel heard the word more work, जब एरियल ने ये लफ्ज more work सुना, he told his master Prospero, उसने अपने आका, अपने मालिक प्रॉस्पेरो से कहा, more work, और काम? He told him that you gave me the word. आका, आपने मुझे वादा किया, I will set you free, I will release you, मैं आपको आजाद करूंगा। When Prospero heard this, dear students, प्यारे बच्चों, जब प्रॉस्पेरो ने यह सुना, he became angry, उसे बहुत गुस्सा आया। And he told Ariel, उसने एरियल से कहा, एरियल को बताया, how dare you
आपने कैसी जुर्रत की टू डिमांड फॉर लिबर्टी, डिमांड, आपने कैसे जुर्रत की आजादी मांगी? क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा? Where would you be? You have been. आप कहाँ होते? If I had not released you from that pine tree. अगर मैंने आपको उस चीड़ के दरख्त से आजाद नहीं किया होता, आप कहाँ होते? पहले बच्चों, जब एरियल ने नहीं सुना, he pardoned it. He told Prospero to forgive him. उसने प्रॉस्पेरो से माफी मांगी। उसने प्रॉस्पेरो से कहा कि मुझसे भूल हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। पार्डन मी सर, एक्सक्यूज मी सर, माय मास्टर एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करो। आई एम रेडी टू गो वायर, मैं हर एक जगह जाने के लिए तैयार। आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग, मैं हर एक काम करने के लिए तैयार। इसके बाद प्रॉस्पेरो ने कहा ऑलराइट, बहुत अच्छा। आफ्टर 2 days their students, there's a good news for Ariel. पहले बच्चों, यहां एरियल के लिए एक खुशखबरी थी। Now what was the good news? वो अच्छी खबर क्या थी? वो अच्छी खबर ये थी that Prospero told Ariel that after 2 days he is going to release him, to set him free, कि 2 दिन के बाद वो आपको क्या आजाद छोड़ देगा, आपको आजाद करो। And when Ariel heard this news, और प्यारे बच्चों, जब एरियल ने ये खबर सुनी कि 2 दिन के बाद उसे आजादी मिलने वाली थी, he became happy, वो बहुत खुश हुआ। and he went out happily, और वो वहां से चला गया। and went to that place, और उस जगह चला गया। as you know, he was a spirit, वो एक जिन था, एक आत्मा था, उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। कभी वो यहां होता था, कभी वहां, वो कुछ भी कर सकता था। तो जजीरे के उस जगह पर पहुंचा where Ferdinand was weeping, जहां फर्डिनेंड रो रहा था। weeping, again this word denotes here some action, so this is verb, or the death of his father। किस चीज पर रो रहा था? जहां फर्डिनेंड अपने बाप यानी एंटोनियो की मौत पर रो रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक उसका बाप यानी एंटोनियो इस तूफान में मर चुका था। सो हियर द वर्ड ओवर, व्हाट इज इट? इट इज ग्रामेटिकली प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज पुट, विच इज प्लेस्ड और विच इज यूज्ड बिफोर a noun or a pronoun to show its relation with the other word in the sentence. For example, in, on, of, by, with, from, to, among, between, etc. All these words are grammatically known as prepositions. So this word or it is used here as preposition. Where was Ferdinand? Ferdinand was इस जजीरे के कोने एक तरफ दूर बैठा हुआ था। वीपिंग, रो रहा था, ओवर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी अपने बाप एंटोनियो की मौत पर वो क्या रो रहा था। हियर द वर्ड डेथ, पहली बार जो डेथ किसे कहते हैं? डेथ का माने है मौत, है इस्लाम। हाँ, डेथ किसे कहते हैं? मौत को। डेथ का माना क्या है? मौत, एंड इट इज ग्रामेटिकली नाउन। What is this verb form? Its verb form is die. Die. Die किसे कहते हैं? मरना, it is verb. And what is its adjective? Its adjective is dead. Yes, yes, yes. हाँ, पहली बात, dead का क्या माने है? मुर्दा। Dead is grammatically adjective. Dead, dead body. The word here it qualifies body. Body is noun, so this dead is adjective. And deadly. Yes, dear students, here is another word, deadly. Deadly is adverb. What is deadly? Deadly is adverb. And adverb is a word. पहले बच्चों, adverb किसे कहते हैं? An adverb is a word which modifies or adds something in the meaning of an adjective or verb.
An adverb is a word which modifies or adds something in the meaning of a verb or an adjective. So that word is known as adverb. So here, death का माने क्या है? मौत, it is noun. Die, मरना, it is verb. Dead, मुर्दा, it is adjective. And deadly, and मुर्दे जैसे उसने, मुर्दे की तरह, and it is adverb. And lastly, Ariel, who was a spirit, who was also the servant of Prospero, and you know how did he become faithful and obedient servant of this Prospero. Prospero, on his arrival to this on this island, he saw Ariel in the heart of a pine tree, and by the power of his magic, he released him from that pine tree. In this way, Ariel became a faithful and obedient servant of Prospero. So, Ariel, lastly, he went on that place while Ferdinand was weeping over the death of his father. This was the lesson. Today is our lesson, namely the Tempest, in which there was Prospero, and you know who was Prospero. There was Melinda, there was Caliban, Ariel, Antonio. These was the main characters of this lesson, namely Tempest, which is a play, and it's the, for your kind information, dear students, is the last play written by William Shakespeare, the most popular dramatist of the world. It is enough for today. This is the end of our today's lesson. The next part of this lesson, namely the Tempest, the Tempest second, I will deliver this lesson, inshallah, on the next Monday. Till then, goodbye to all of you. Baki wassalam.